You've heard of an A and B's also? Then there are C's and there are D's, and then there's the E. And that's what we're going to talk about, isn't it, Mansi? Yeah. Yeah, in this episode of A World in a Word podcast, here with me, Soni, and Mansi Thakkar, talking about graphology and how it can enhance your life. Today, we're going to talk about the letter E. Now, this sounds very mysterious, Mansi. Tell me more. So, have you seen the elephant with big ears? Mm-hmm. So that's what our children learn. E for elephant and E for ears. Yeah. So, if we say, so you know, graphology is all about letters. And every letter stands for something, some trait. Same way, the letter E, especially the small case E, stands for our listening powers. Oh, really? You mean that little loop in the E represents the ear? Yeah, it represents the ear. So you've seen how the elephant ear looks and how we draw when we were small children. It's kind of similar to the letter E. Ah, so that's what our episode is about. You must have heard a lot of people, especially women, complaining that, oh, my husband doesn't even listen anytime what I speak, especially when they're complaining or when they have to talk about, in-laws, and the husband just doesn't want to listen. Or when they repeat, oh, tell me, what did I say? And the husband says, oh, really? Did you say something? So things which a person doesn't want to listen, or we say are selective listeners. Selective listeners are people who have those loops of E quite closed. They look like C. When they are much smaller, so then the listening power of the person, or so to say, they are selective listeners. They only listen to or open their ears when the topic is of their concern or their interest. Oh, and they might probably come across as insensitive or terrible communicators, wouldn't they? Yeah, they do come across, especially in relationships, when one person is a non-listener or a selective listener, and the other person wants them to listen to whatever they are speaking. They come across as, oh, not interested, not wanting to know more about me, or are detached from me. That is what another person in the relationship will always say. That why isn't this person listening to me? Why is this person not giving me their mindful or earful? That's what we say. But actually it goes a long way. When they were really small or when they were growing up, probably they heard a lot which they didn't want to listen to. We have so many instances where joint families are staying together, or probably there were instances where there were a lot of fights and arguments, or so many other situations where the child had to listen to things which they didn't want to, and subconsciously they stop listening to things which they don't want to. They close their ears to things, to the music they don't want to listen. And that's when anything that they are not ready to open up to or listen or have a communication on, very subconsciously they close down. And even when you're speaking in front of them, they may be looking at you, but actually nothing is going in their ears. तो माने अंग्रेजी का जो अक्षर है E, उसका जो लूप है, वो represent करता है हमारा कान. और जब हम बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे अनुभव हुए हैं जो हमको पसंद नहीं है, तो हमारी एक आदत बन जाती है. ये शायद हमको पता नहीं है, सबकॉन्शियसली होता है, और हमको पता नहीं चला कि हमने कब अपने मन से सुनना बंद कर दिया. तो ऐसे लोग हैं, वो आगे जाके रिलेशनशिप्स में थोड़े सफ़र करते हैं. हाँ, सफ़र करते हैं. दोनों तरफ से सफ़र होता है, बिकॉज जो बोलता है उनको भी तकलीफ़ होती है कि सामने वाला सुन नहीं रहा है, और जो नहीं सुनते हैं उनको थोड़ी कम तकलीफ़ होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको भी ऐसा लगता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं अटेंशन देना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते हैं. ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि जिनकी जो बड़ी लूप्स होती है, जो सब कुछ सुनते हैं,
वो कहीं ना कहीं जो नहीं सुनना है वो भी सुन लेते हैं। जैसे हम बड़े लोग कहते हैं कि भाई कान इसीलिए 2 दिए हैं कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो हर चीज़ भी सुनना ज़रूरी नहीं होता है जो अपने लिए नहीं है, जो अपने लिए बुरा है। तो अगर वो हम निकाल पाएँ तो इट हैज़ टू बी अगेन एज वी से बैलेंस, कि हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते हैं, वो एक अवेयरनेस से करें। एक पोजीशन होती है बिजनेस में, आप एक अच्छे बॉस है या एक अच्छी बड़ी पोजीशन पे है कोई कंपनी में, तो भी आपको वही सुनना है जो सही है। तो उसके लिए भी एक सिलेक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है। हर चीज़ जो आप आती है वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए भी अगर आप सिलेक्टिव लिसनर है तो एक अच्छी बात है। तो ये एक अंदरूनी समझ है। आप कौन से प्रोफाइल में काम करते हैं। जैसे अगर आप टीचिंग है, काउंसलिंग है, क्रिएटिव वर्ल्ड में है, तो ओपन ईयर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सब कुछ सुन के उसको एनालाइज करके आप आगे बढ़ते हो। लेकिन एक ऑफिस या कमर्शियल पोजीशन पे है तो आपको उतना ही सुनना है जितना आपके लिए ज़रूरी है या जो आपको आगे लेके जाए। नहीं तो पूरा क्लटर हो जाएगा। तो कच्चे कान के हो जाएंगे। जो हर कोई जो बोलता है वो आप लेते जाएंगे अपने अंदर। कहाँ वो यूज़ करना है, ये सुनना और नहीं सुनना, तो एक कॉम्बिनेशन। उतने बड़े भी लूप्स नहीं होने चाहिए और इतने छोटे भी लूप्स नहीं होने चाहिए। आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से जो एक संतुलन वाला ई है, तो आप इनफ सुनोगे भी जहाँ आपको ज़रूरत है, और उतना भी आप फिल्टर कर पाओगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो समझिए कि हम एक बैलेंस्ड ई, तो हमको उसके देखकर ही एक थोड़ा सा हमको अंदाजा तो आ सकता आपके हैंडराइटिंग की जो साइज है, छोटी है, बड़ी है, उस हिसाब से आपकी ई अगर हो तो आप एक और अंडरस्टैंडिंग की आप कौन से प्रोफेशन में हो, आपको क्या ज़रूरत है, आप किसके साथ बैठे हो, उस हिसाब से आप अवेयरनेस रखेंगे तो इजी हो जाएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने एस्पेक्ट आज शेयर किया है, जस्ट द लेटर ई and just that loop and how it can change the way you listen and the way you relate. Absolutely amazing. And Mansi, we're looking forward to so many more episodes so that we can share lovely ideas, fantastic insights for our viewers who have been asking us a lot of questions. So we'll definitely keep answering all your queries. Thank you for being with us. Do subscribe to our channel if you like the content. And with that, it's thank you from me, Soni Thakkar, and from Graphologist Mansi Thakkar, who's been with us for so many episodes. Thank you, Soni.